नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चार्ट पे चर्चा। एज प्रॉमिस वी आर बैक। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। वी आर बैक विथ वन मोर व्यू ऑन market. Specifically, we will be covering Sri Cement and Ultratech today. Sri Cement because there has been some news over the weekend regarding some tax evasion वगैरह कुछ तो भी, मगर हम चार्टिस्ट हमेशा चार्ट पे भरोसा करते हैं। सो देखेंगे आज एक्चुअल में चार्ट्स पे श्री सीमेंट क्या दिख रहा है। उसके पहले एक जस्ट लिटिल व्यू ऑन निफ्टी फॉर एक्सपायरी बिकॉज एक्सपायरी वीक है एंड दे विल मूव वी विल मूव टू श्री सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। सो या पहले निफ्टी का व्यू देखते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। यस सो दिस इज द निफ्टी चार्ट। मैंने ऑलरेडी ये चार्ट ट्वीट भी किया था, मगर फिर से एक बार एक्सप्लेन करने के लिए इसको कवर कर रहा हूँ। फ्राइडे को इवनिंग में ट्वीट किया था, सॉरी सैटरडे मॉर्निंग। अगर इसको ऑब्जर्व करो यहाँ पे, दिस लुक्स लाइक ए बाइंग क्लाइमैक्स कैंडल after this consistent move off with the low volumes and dull volume, little average volumes कहीं कभी कभी back to back dull volumes यहाँ पे थे इस मूव में, and then we have seen a suddenly very high volumes on this green candle which is typically of buying climax candle। उसके बाद में ये रेंज बाउंड मूव हो गया 4 days within this buying climax candle and Friday it has given a breakdown। यहाँ पे अगर देखो there was a higher volume candle than this green volume again, यानी बिफोर ए ब्रेकडाउन कैंडल के पहले थर्सडे के दिन, which was clear indication कि कुछ sellers have dominated without crossing the last Friday's highs। थर्सडे को सेलर्स डोमिनेट थे, फ्राइडे के दिन फॉलो थ्रू भी आया है। कंसोलिडेशन विद इन बाइंग कैमेक्स कैंसिल एंड कैंडल एंड देन ब्रेकडाउन। व्हाट दिस टिपिकल इंडिकेट, इफ normal targets of this has to be seen, the minimum targets comes around 18,550 500 zone। दिस इज हियर, दिस रेंज का जो लोज है उसके पास में। And if this complete breakdown triggers ahead, and which is much likely given buying climax candle and then follow through with higher volumes, यहाँ पे सेल जो आया है higher volumes and follow through। So if this pattern of volume expansion gets combined with the volume price analysis pattern of buying climax and distribution, then the potential target for this comes towards 18,100 18,000 zone। ये जो लेवल है पहले जहां से ये मूव ट्रिगर हुआ था, this complete move needs to be retraced till here। and now comes the point कि ये जून में आएगा या जुलाई में आएगा। well, timing is not a best way to guess in the market and we cannot time it, but potential of 18,100 18,000 to get tested in July is very high, and this view gets negated when this high volume candles of Thursday high gets crossed, which is around 18,920। So if 18,920 is not crossed until and unless a downside towards 18,100 remains open, and this may get covered within maximum by July। And don't be surprised if 18,500 get tested by June expiry। जून एक्सपायरी तक 18,500 आने के चांसेस बहुत हाई हाई है, and but 18,100 may get tested by July and view negates above 18,920। Remember that, do manage your position accordingly। So let us move to Sri Cement now। इसमें एक और पॉइंट है आनंद। या विजय। जो सॉल्स्टिसेस का भी रोल होता है ना, क्योंकि टाइमिंग की बात हो रही है कि करेक्शन हाँ आना हाँ चाहिए या नहीं। हाँ 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 तो हाँ। तो 21 जून वाज समर सॉल्स्टिस। ओके। सो जनरली सॉल्स्टिसेस के अराउंड भी टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। टाइम तो साइकिल आफ्टर टाइम हाँ साइकिल्स। हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी है। एंड गैन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल जो था 18,838, उसके आसपास से ही मार्केट टर्न अराउंड कर रहा है। सो बोथ इंडिकेट दैट देयर इज अ गुड चांस ऑफ अ करेक्शन। अब वो कितना करेक्शन डीप होगा, हार्ड टू से, बट हाँ 18,100 200 तो पॉसिबल लग रहा है।
Thank you, Vijay, for your inputs. And Vijay, over to you for Shree Cement Elliott Wave view so that I'll cover price action later on. Sure. Let us see larger picture of Shree Cement. मंथली चार्ट है ये श्री सीमेंट का. And this is our first we'll be covering a longer picture and then we will come to very short term view because of news flow क्या कहाँ पे buying या selling करना हो क्या पे क्या करना है we'll come to that later on. First larger picture. Correct. So roughly wave count कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि wave one top was somewhere here in 2006 and 2009 जो मेजर मार्केट बॉटम था उसके साथ ये बॉटम आउट हो गया है. वहां से ये थर्ड फोर्थ बिकॉज फोर्थ वेव्स टिपिकली रिट्रेस 23.6% और 38.2%. तो इस वेव का ये एग्जैक्टली 38.2% रिट्रेस करके वहां से ये ऊपर चला है. बट इफ यू नोटिस दिस एंटायर अप मूव हैज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग वेव्स. यू डोंट सी अ क्लियर इंपल्स एनीवेयर. अगर ये 1 2 है तो अगर ये थर्ड है तो the fourth is coming into the area of 1. So this is all maybe an ending diagonal that formed. इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो दिखेंगे आपको ओवरलैपिंग वेव्स और A B C D E something like that. So it looks like this was an important top and उसके बाद जो फॉल हुआ है इसमें आपको impulse wave दिखता है. Right, it's a 5 wave drop and ये जो रैली शुरू हुआ है जून लास्ट ईयर से एग्जैक्टली एक साल का मतलब लास्ट समर सोल्स्टिस से लेके इस समर सोल्स्टिस तक रफली वी कैन थिंक लाइक दैट. ये अगेन बहुत चॉपी है. सो लॉट ऑफ ओवरलैपिंग वेव्स. सो दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक अ करेक्टिव वेव. ये इंपल्स वेव नहीं है. अगर हम वीकली स्केल पे भी जाते हैं तो वी कैन सी बेटर. वेरी चॉपी. ये देखो ये सारे ओवरलैपिंग वेव्स हैं. सो इधर हियर और हियर an important top seems to be done. Anand, I'm sure you would have looked at volumes, but ऐसे कुछ खास वॉल्यूम्स थे नहीं ये पूरे अप मूव में. यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स थे. So the price was rising on lower volumes. Implication ये है कि अगर ये B wave top है, so this is like a low risk shorting opportunity for me. अगर हम डेली स्केल पे जाते हैं तो price currently is at 25,145 and last high was 26,580. So this being the stop loss, this is like a positional shorting candidate. Potential target at least close to the way bottom, and if one is lucky it can even go to the previous wave 4. So 17,865 से लेकर 13,350 तक ये जा सकता है. There is also the moving average 100-day simple moving average which is at 19,400. ये dip भी हो सकता है. Currently it is rising. So shorting target could be anywhere close to this at least. This is what I feel. Price अभी 100-day and 40-day moving average पर टिका हुआ है, but 20 के नीचे closing हो चुका है with a strong red candle. So once these break, it's possible कि कल gap down के साथ खुले. I think if that happens, one should wait for a little bounce back to the 20 DMA before going short on this. Anand, over to you. Thank you, Vijay. So here is the chart of Shree Cement. This is weekly chart. Yeah, let us look at why I'm covering weekly is already monthly has been covered by Vijay and monthly positional view has been shared by him. Now let us look at weekly with volumes and price basis. As
This top looks like done in the March, October, forming a double top, some September 2021. And then this looked like a wave, correct, which was till last year June. And this present till June might have been either it ended on 15 on February or June 2023, 1 year of move, B wave. And if you look at this thing in a volume basis, observe this move. After this complete down move, there were very high volumes around September 2022. Yeah. And then this is weekly, 2 weeks in a September 2022. And price has just gone little ahead of that in this wave, in this move, and reversed back. It was unable to capture this resistance nicely. These volumes being so high over here, still it could not capture this resistance of somewhere around 26,000, which was the why that was important was observe this here. Resistance around 26,000 becomes important because this was the first drop support level after falling from the highs of around 32,000. From here it has bounced once, second time it bounced, tried to cross those highs, failed and broke down. After breaking down, it got rejection over there, gone all the way till 18,000. And the same level, even after such high volumes over here, these volumes, it could not decisively cross above the 26,000 level. So this was a very important indication राइट नाउ कि जब तक ये इसके ऊपर फिर से नहीं टिकेगा द रिसेंट हाइज जो भी है दिस इज नॉट एट ऑल ए बाई डिप आएगा और मंडे हो सकता है गैप डाउन आएगा फिर बाद में 2-3 महीने के बाद में गैप फिल करने आएगा जब भी ये फिर से यहाँ पे अगर आए इन केस वी नीड टू बी वेरी अलर्ट कि यहाँ पे बाई नहीं करना है जब तक ये लेवल इनफैक्ट दिस विल बी ए लो रिस्क विजय हैज पॉइंटेड जस्ट नाउ कि बी अगर डन हो गया है देन देर इज वेरी लेस चांस कि गैप फिल करने जल्दी आएगा 2-3 महीने में नहीं आएगा हो सकता है ये नेक्स्ट तेजी में ही आएगा बाद में तो भी कभी भी दिस कैन बी रिमेन लाइक ए ब्रेक डाउन गैप विच इज टिपिकल इन द थर्ड वेव राइट करेक्ट तो अगर ब्रेक डाउन गैप ये बनता है तो टाइम टू बी अलर्ट कि गैप फिल करने आएगा वो गेम अभी मत खेलिए वेट कीजिए नाउ पॉइंट कम्स की बाउंस के लिए बाई कहाँ करना है या फिर सेल कहाँ करना है पुल बैक्स वगैरह में इफ यू आर लक्की मंडे के दिन अगर ये 24,000 के पास में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सेलिंग का 2,000 पॉइंट का रिस्क है डाउन साइड आपको 17,000 तक का अगर मिल रहा है रिस्क रिवार्ड इज वेरी फेवरेबल यू कैन इजीली गो शॉर्ट समवेयर अराउंड 24,000 एंड आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा उसको बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल सपोर्ट ओवर हियर इसके नीचे शायद ज्यादा ना खुले एंड इफ एट ऑल इट ओपन बिलो दिस एक पुल बैक इसके आसपास मिलेगा मंडे ना मिले आगे शायद मिल जाए डाउन साइड इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21,600 500 के पास दिस जोन अराउंड 21,000 एंड इफ दैट गोस राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 28,000 व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस वॉल्यूम के बाद का जो डिप आया था वहां पे सो समवेयर अराउंड 20,000 ए टाइम टू बी अलर्ट दिस इज वीकली लेट अस लुक एट डेली as as we are chartists we believe charts and we know insiders knows everything beforehand and the position is created observe over here it was continuously in a down move over the last full week 5 days successively daily day lower low lower high pattern so beautifully and we get a news on a weekend big news of 23,000 crore or something tax evasion notice वगैरह जो भी है रेड वगैरह so such a big news after a good down move nice position has been built ये कहां तक जा सकता है सेम ईयर 24,000 23,800 के आसपास में सपोर्ट दिख रहा है उसके नीचे और बड़ा टारगेट आएगा 21,500 एंड देन 20,000 काइंड ऑफ लेवल्स बट इमीडिएटली अगर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सेलिंग का पोजिशनल में 2,000 पॉइंट का रिस्क लेकर आपको शॉर्ट मारना है यू कैन इजीली लुक दैट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहीं भी बड़ा बिग सेलिंग वॉल्यूम नहीं है सो जो भी आना है मंडे आएगा या आगे आएगा ऑब्जर्व दिस वॉल्यूम्स फिर से यहाँ पे सेलिंग trying to break down, move higher, but the weekly volumes which we have seen the September 2022 wale, they took over here, they did not let it cross those highs and started down move. Such a beautiful play. Remember, the stock fundamental wise, the stock is around a high P of around 68 something.
market cap of 90,000 crore, yearly profit somewhere around 2,000 crore, and you get a tax notice of around 23,000. Well, it is obvious कि कंपनी भी उसको क्लेम करेगा, फाइट करेगा, अभी नोटिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा फ्रॉम सीबीआईसी, मल्टीपल प्रोसेस चलेगा, बट market hates uncertainty. Remember this thing. So until there is uncertain about what will be the actual tax outgo, what will be the actual penalty on a company, or there won't be any penalty, XYZ, any reasons, this stock is going to be under pressure, or at least outperform तो जल्दी में नहीं करेगा. So weak candidate for now in a weak market will be best opportunity, and this can have a rub off effect on other cement companies, specifically Ultratech, JK, the large bigger names as well as smaller names who are trading at a higher P's or higher valuation wise. Focus on, अगर आपको स्ट्री सीमेंट पे फोकस नहीं करना है, you can look for pull back opportunity, immediate short नहीं मानना है. At least you should be little cautious. अगर सेल नहीं करना है तो बाइंग के लिए better to wait instead of looking for a dip buying करे, because normal human tendency है यार, बड़ा कंपनी है, बड़ा नेम है, 10% डाउन अगर मिल रहा है यार, बाई कर लेते, एक मूव मिलेगा अच्छा. So better to wait. Dip buying can be dangerous over here. That's the point over here covering for this today. कि deep buying हर जगह नहीं करना चाहिए. Deep buying के चक्कर में आदानी 4,4,500 से 1,000 आया था, लोग 3,000 से लेके deep buying करते बैठे थे. So there has to be a point where the deep buying can be risk rewarding, worth taking. As of now स्ट्रीम में वो नहीं दिख रहा है. So patience रखिए. Let us move to one more stock. विजय, अल्ट्राटेक के मार्किंग्स है? हाँ हाँ. Okay, so first you cover it, then I'll go with it. अल्ट्राटेक का भी वेव काउंट वाइज सिमिलर लग रहा है, श्री सीमेंट की तरह ही लग रहा है. दिस इज द मंथली चार्ट. इनफैक्ट वेव 5 हैज बीन ह्यूज एक्चुअली. काफी बुल रन था ये 2 साल का. 2900 से स्टॉक Somewhere around 8,000 plus. हाँ 8,200 का हो गया है. सो दैट्स मैसिव रन. एंड ये करेक्शन यहाँ से जो दिखता है, ये तो 3 वेव दिख रहा है मंथली स्केल पे, तो ए बी सी. सो ए हो गया है, एंड अगेन दिस इज बी वेव. इट लुक्स लाइक दैट, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी कोई आपको इम्पल्स वेव नहीं दिख रहा है. दीज आर ऑल ओवरलैपिंग वेव्स. इवन इफ यू गो डाउन टू द वीकली स्केल, कुछ ऐसा ही है. एक ट्रेंड लाइन भी मैंने प्लॉट किया है. सो द कॉशियस ट्रेडर्स कैन वेट फॉर अ ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, बट that is like a move of another 300 rupees. Vijay, on weekly, doesn't it look like a impulsive somewhere around 7,000 first bottom and then pull back towards 7,800 as a B in a weekly when it has started falling from 8,000 in a month last year? This whole thing, yeah, this is impulsive. 1 2 Yeah, A, B, C, 3 yeah, 4 5 ऐसा लग रहा 5, है. yeah. Definitely, yeah, it looks like that. That's the impulsive, yeah. Yeah, There can be A leg and then B leg. correct. तो अगेन वीकली पे बेरिश एंगल्फिंग है यहाँ पे, Yeah, this is interesting. है ना. सो अगेन अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखता है, क्योंकि ये दोनों कैंडल्स अगर देखोगे तो ये रेड कैंडल में तो न्यू हाई भी नहीं बना है. इनफैक्ट द हाई इज लोअर देन द अर्लियर हाई. सो This is not a 8430 typical. This is not a typical bearish engulfing candle, but स्टिल. yeah, इट because इज. the open is not above the high, हाँ but rest हाँ, everything करेक्ट else matches. करेक्ट. जैसे ये है, दिस इज 100% कंफर्म बेरिश एंगल. Yeah. तो 20 डीएमए के ऊपर नहीं है प्राइस, क्लोजिंग नीचे दिया है. सो दैट इज अ गुड साइन, बट स्टिल आई वुड से कि ये they definitely looks bearish, and maybe we can wait for the break of the trend line, which is also pretty close to the 20 DMA, which is 806 sorry 7595 20 week moving average on weekly scale. डेली स्केल पे तो
20 DA में ऑलरेडी ब्रेक डाउन होगी। तो इसका भी वैसा ही है So कि overall, somewhere around 5,000 can be the potential target. potential target. Yes. 5,100. Yes. And this also looks like a rising wedge kind of, if you look on a weekly. Yes. Correct. Unless price proves us wrong, ये तो wedge लग रहा है. It's a typical wedge with a throwover Wow, and then nice reversal. opportunity. Yeah. पहले ट्रैकिंग में नहीं आया. इस पर नजर रखते हैं. So ये है कहानी इन दोनों स्टॉक्स का. Anything else you want to cover, Anand? Yeah, Ultratech I'll cover for on a daily charts. Yeah, this is Ultratech chart. Observe same similar to Shri, यहाँ पे भी continuous selling था. So what's the first level to watch for Ultratech would be somewhere around this lows of this red candle, which is around 7,800. जैसा श्री में 21,500 के पास में कुछ वहाँ पे लोज आ रहा था रेड कैंडल के बाद. In this it is around 7,800. It is not much far. And if this goes, this complete move can turn out as a false move, and which has a bearish implication and can give all the way move till 7,000. 7,800 से 8,400 का 700 600 700 points on a downside comes around 7,000 near about, which is also the previous supports over here. This can be the potential target. Now, if Sri Cement is going down and if anything seriousness happen in the matter, which I doubt, but as of now charts also points for a lower target, so possible कुछ भी हो सकता है. So it will have a rub-off effect on across the sector, and specifically one which are highly rated kind of valuation wise or re-rating wise. जैसा पी अगर 50, इसका पी somewhere around 46 47 के पास as of now है, and market cap around somewhere around 2.5 near to 2.5 lakh crore. It is going to have an impact over here also. Although it has a profits better than Sri Cement, so market cap is also justified. Valuation by 46 say white Sri Cement has a PE of around 68 plus. But nevertheless, uncertainty जब सेक्टर में रहेगी तो डेफिनेटली रब ऑफ इफेक्ट आएगा, कूल ऑफ पीरियड रहेगा, सम क्या बोलते हो कंसोलिडेशन फेज आओ या प्राइस करेक्शन आओ, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन, समथिंग इज गोना बी देयर. So unless it sustains above these highs, recent highs of around 8,400, which is also kind of double top on monthly, better to be cautious over here. श्री में अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ना मिले कल, इसमें शायद मिल जाए ओपनिंग में, बिकॉज यहाँ पे रिस्क 300-400 पॉइंट्स का ही रहेगा. एंड डाउन साइड अगर 7,000 तक भी आ रहा है तो आपको एटलीस्ट वो तो टेम्पररी में एक अच्छा मूव मिलेगा. एंड ऑप्शंस ऑफ अल्ट्राटेक आर लिक्विड कंपेयर टू श्री, सो इवन यू कैन हैव अ कंपेरेटिवली लिक्विड है. हाँ, यू कैन गेट ऑप्शन अपॉर्चुनिटी इन दिस. श्री में ऑप्शन अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी. करेक्ट. सो बी अलर्ट, डीप बाइंग से बचिए स्पेसिफिकली इन श्री, which is a tendency of women to do deep buying. हो सकता है एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाए if you take a retail risk with of 2,000 and take a short trade. Yeah. Yeah. So that's it from us for today. Hopefully you like it. Please share your feedback. We'll try to cover a couple of other stocks next week along with the index if there is major change in index. Yep. Yeah, Okay. that's it. Bye. Thank you.